Hi, this is Namita Chaturvedi here. Today and my upcoming videos, I will be presenting Surdas ji, Kabir Das ji, Tulsi Das ji's poetry, and I will be explaining in Hindi and English so that it will become easier to make children understand in better way. And I am sure it will enrich our Indian literature also. So here we go. First stanza is like this. Charan Kamal Bando Hari Rai means I worship the lotus feet of Lord Shri Hari. मैं श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ या करता हूँ. Here charan kamal is lotus feet. Bando means pray. Hari Rai means Lord Krishna and Radha. जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे means with his blessing one who cannot walk can even cross the mountains. जिसकी कृपा से एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता वह पर्वत भी लांघ सकता है. Here पंगु means who cannot walk. जाकी कृपा means with his blessings. गिरी mountain. लंघे cross. अंधे को सब कुछ दर्शाई means with his blessing even a blind person can see everything. हरि की कृपा से एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है. Here अंधे means blind, सब कुछ everything, दर्शाई can see. बहिरो सुने गूंग पुनि बोले. One who has hearing problem can hear now, and one who cannot speak start speaking again. जो व्यक्ति सुन नहीं सकते वे हरि की कृपा से सुनने लगते हैं और जो बोल नहीं पाते वे भी बोलने लगते हैं. Here bahiro means who cannot hear. Sunne means hear or listen. Goong who cannot speak. Puni again. Bole speaks. रंक चले सिर छत्र धराई. Even poorest can become king and walk with royal umbrella with his blessings. एक गरीब व्यक्ति भी राजा के समान छत्र लेकर चल सकता है. Here rank means poorest person. छत्र means royal umbrella. सूरदास स्वामी करुणा में. Here Surdas ji is telling that his beloved God is very kind and compassionate. सूरदास जी के स्वामी श्री हरि वो बहुत दयालु हैं. Here karunamay means kind. बार बार बंदों तिह पाई. So he worships him again and again. वो ऐसे करुणामय भगवान की वंदना बार बार करते हैं. Here बार बार means again, bando means pray. In this second stanza, Surdas ji is describing the beauty of little Krishna's playful activities. Here, Kilkat Kana Gutruvani Avat. Little Krishna is crawling and making some cheerful sounds. नन्हे काना घुटने चलते हुए और बहुत खुश होकर आ रहे हैं. Here, Kilkat means cheerful sounds. Gutruvani means crawling. मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबे धावत. He is running to catch his shadow on the Nand Baba's house courtyard, which is made of gold and precious stones. कृष्णा नंद बाबा के आंगन जो कि सोने और मणियों से बना हुआ है उस पर अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं. Here Manimay means precious stones. Kanak
gold. Angan, courtyard. Nand, Krishna's father. Bimb, shadow. Pakaribe, catch. Dhavat, running. कबहु निरखी हरि आपहु छाह को करसो पकरन चाहत. Sometimes Hari, little Krishna, looks at his shadow and wants to catch it with his own hands. हरि अपनी छाया को देखते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं. Here, kabahu means sometimes, nirakhi to see, apahu own, chah shadow, pakran catch, chahat wants, and kar hands. किलक हसति साजति दवे दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत. Again and again he looks at his shadow and laughs out loudly. And when he laughs, his front two teeth are looking beautiful. कृष्णा अपनी प्रतिबिंब को देखकर बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं. और जब वे हंस रहे हैं, उनके सामने के दो दांत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. Here, Kilak hasi means laughs out loudly. Sajati looking beautiful. Dave two. Datiya teeth. Puni again. Avgahat to see and understand. कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजती. The shadow of Krishna's hand and feet falling on the golden earth. कृष्णा के हाथ और पैरों की छाया स्वर्ण भूमि पर पड़ रही है, जो कि एक उपमा के समान है. Here, कर पग छाया means the reflection of hand and feet. कनक भूमि means golden earth. प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती. The shadow of his each feet and hand on each money means precious stone, looks like a throne made up of lotus. कृष्णा के हर हाथ, पैर और मणिमय आंगन मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कमल के सिंहासन पर बैठे हुए हैं. Here, pratikar means each hand, pratipad means each feet, pratimani means each precious stone, vasudha earth, kamal lotus, बैठकी सहजती means looks beautiful. बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती. Seeing all these cheerful activities done by little Krishna, Mother Yashoda is very happy and she is calling Nand again and again to show Krishna's playful activities. माँ यशोदा कृष्ण की बाल लीला देखकर बहुत खुश हो रही हैं और वे बार बार नंद को बुलाती हैं जिससे वे भी इसका आनंद ले सकें. Here, Bal means child, Dasa condition, Sukh happiness, Nirakhi to see, Jasoda mother of Krishna, Puni Puni again, Nand father of Krishna, Bulavati calls. अचरा तरले ढाकी सूरदास के प्रभु को दूध पियावती. After that, Mother Yashoda hides little Krishna with her sari and starts feeding milk to the beloved god of Surdas ji. माँ यशोदा अपनी साड़ी से ढककर सूरदास के प्रभु को दूध पिलाती हैं. Here, achara means sari, dhaki means hides, Surdas ke Prabhu means beloved god of Surdas, that is Krishna. Doodh piyavati feeds milk.